It was heartbreaking to see India lose the way they did. To be honest, they were outplayed in all departments by Australia. Was India lackluster in their approach, or was it the pitch, or was it Australia being Australia? We'll review the final at length and try to figure out where India lost the match on off the pitch with Ankit on India.com. And to discuss on this session with me, we have with us Tanveer Azam joining us for the very first time. He's editor DNA. We also have Kaushik Paul and Abhishek. Abhishek and Tanveer, they are making their debuts today on Off the Pitch with Ankit. So without wasting any time, I'll start with you, Tanveer. First up, let's address the elephant in the room. Where did India lose the match? कहाँ हमने मैच हारा? I think. Can you guys hear me? Am I audible? Okay. For me, the loss of Virat Kohli's wicket at that juncture, and then the inning which was played by Rahul, the slow inning which Rahul played, and ultimately he perished. And then I was very disappointed with this guy, Surya Kumar Yadav, also because he's known for his power hitting and all. He played 28 balls and he scored just 18 runs. So in batting department, we lost the match here. Bowlers, of course, Sami and Bumrah were good, and they got their chances again. Head also, but I think Head has got all his luck yesterday. History was in his favor. Everything was aligned in favor of Travis Head. Yeah, spinner disappointed me, especially Kuldeep Yadav. I think he was not able to pitch the ball at the right spot. He was not even able to beat Australian batsmen even once throughout his spell. And I was relying very heavily on the spinners because after getting 3 wickets in the first 10 or 11 overs, we were like, okay, we can come back, and we were not even able to make Head feel anything uncomfortable against our spinners today. That was also very lackluster yesterday. I don't know what was happening with all the team. So for me, these were the reasons which led us to defeat. And of course, Rohit Sharma's I would definitely call it a reckless shot. It was a big match, the World Cup final, and he should not have played like he's the next Saeed Afridi 2.2. That they will make your attitude and I will go and I will hit my shots. A lot was riding on his shoulder. He should कुछ realize ज्यादा ही that. तनवीर जी कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था क्या इंडिया ये फाइनल Yes. को? And Rohit, and he will now sit at home and always remember that he missed the trophy. That was his act also which caused us the defeat because it was a World Cup final and we were playing against Australia. Like you all keep on saying that they are like what final royalties, something like that. The word which you वर्ल्ड use. कप रॉयल्टीज है, वर्ल्ड कप रॉयल्टीज है ये लोग. Okay, they are still there. Of course, they are not invincible फाइनल like में the ऑस्ट्रेलिया जैसा ही खेल रहा था तनवीर. पॉन्टिंग की टीम की तरह नहीं है बट यस दिस टीम अगर आप ध्यान से देखो दिस टीम हैज वन द WTC, दिस टीम हैज वन द एसएस, दिस टीम हैज वन द वर्ल्ड कप. They are winning everything, यार. They are winning everything. They are literally winning everything and silently without making much noise. And now they have defeated us in India on a wicket which was favorable for us only. No, but they planned their game in such a manner. They were so good in their approach from the first ball. Even when after we hit 80 in the first 10 overs, they were not losing hope. They just kept on using their plan. The off cutters, Cummins bowling so well, and the Hazelwood with those off cutters against Surya, and then Cummins getting that extra bounce suddenly against Virat Kohli. It was all सब planned. बैट्समैन के लिए प्लान रेडी था पैट कमिंस के पास, And they एंड implemented it. एग्जीक्यूशन बढ़िया था. Yeah. The execution was plan. We also made a lot of plan. No, everyone makes plan, but वो if होना we एक चीज है, एग्जीक्यूशन करना execute karna और is एक the चीज है. best part, and they executed it very well. Everyone was up to the mark. Their fielding was very good. No, In all see, three departments they beat yeah, us, they and won they the were toss. deserving champions. They won the toss, and I think I was there with you. We were talking, राइट and you राइट said, राइट. and हम everyone चौंक गए agreed थे. that कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग लेना, वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी इंडिया के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में, मतलब एवरीथिंग इट वाज लाइक कि सब उनके अगेंस्ट में ही जाएगा. But they proved their captain right. The kind of fielding, Warner 36, 37 at the like twilight of his career, he is of course going to retire. Smith and all, they fielded so well, and that brilliant catch by Head. Head was That turning heads. He gave catch us a was lot of something I headache don't. yesterday. I don't think वो कैच अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा कोई और ले सकता है. पाकिस्तान तो बॉल के करीब भी नहीं पहुंचते. वो तो बोल देते जाने दो, कोई और ले लो, ऐसे हाथ दे दो उनका.
So Right, they right. were there to win. They did it. Yeah, and there is no shame in losing to a champion boss, like No, no, Sunny no. ji said. This is a very good There's Indian no side. shame. Abhishek, This is a very. I'm Abhishek, still proud of this Abhishek. team. Right, right. Yeah, yeah. Yes, Ankit. Abhishek, see, we may have lost the match, Abhishek, but this is a. Can I just ask you to go on mute? Abhishek, can you just go on mute? This is a this is a star studded Indian team. ऐसा कोई शिकायत तो हमें नहीं है इस इंडियन टीम से. वन ऑफ डे किसी का भी हो सकता है. लॉ ऑफ एवरेजेस विल स्ट्राइक यू समडे. Unfortunately, it struck us when we really didn't want it to strike us. Do you agree with तनवीर यहाँ पर, जैसे कि तनवीर कह रहे हैं कि इंडिया रोहित शर्मा या विराट कोहली का विकेट काफी महत्वपूर्ण था. आपको कहाँ लगता है इंडिया मैच हार गया? क्योंकि पहले 10 ओवर तक वी हैड आवर नोजेस इन फ्रंट. तो अभिषेक, आपको कहाँ लगता है इंडिया मैच आ रहा है? ओवर टू यू, अभिषेक. Oh, thank you, Ankit. But first of all, I'll like to give the answer of your very first question. No doubt, India team is the winning team. I'll still consider India as one of the best team of this World Cup. Not one of the best team. In fact, the only best team in the World Cup. No doubt, Australia won the World Cup, but it was just a bad day for us. India is still the best team of the World Cup. और we were discussing कि सिर्फ एक मैच से फाइनल डिसाइड नहीं होना चाहिए कि इसकी बातें हो चुकी थी. But the point is, India is the best team. And to the second question कि हम मैच कहाँ हारे, सी देयर नंबर ऑफ थिंग्स इन द बैटिंग लाइनअप. शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए, श्रेयस अय्यर बहुत जल्दी आउट हो गए, केएल राहुल ने बहुत धीरे खेला. बट when India was bowling, the very first three wickets, India were very close in the game. Like we all were thinking India will win this match. But when the spinners came, I think Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja, उन दोनों ने 10-10 ओवर डाले. So 20 overs of the spinner, not even a single wicket. और कोई ऐसी बॉल भी नहीं थी जहां पे आपको लगा कि विकेट आ सकती है. Kuldeep Yadav, it was one of the worst spell for Kuldeep Yadav on a final. आपको 10 ओवर दिए थे, 10 ओवर में यू आर एज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्पिनर ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई यू आर सिलेक्टेड इन वर्ल्ड कप टीम. आप चाहल से ऊपर टीम में आए थे, आप अश्विन की जगह खेल रहे थे. यू आर द बेस्ट स्पिनर इन इंडिया. दैट्स व्हाई यू आर सिलेक्टेड. दैट्स द सिंपल थिंग. बट नॉट इवन अ वन बॉल ऑफ कुलदीप यादव जिसको आप ये कह सकते हो कि एक विकेट टेकिंग डिलीवरी थी या इसमें कुछ अलग हुआ था. इट वॉज द सेम पिच on which Adam Zampa ball. It was the same pitch on which Maxwell balled and took the wicket of Rohit Sharma. Adam Zampa took the wickets, but why not Indian spinners? If Indian pacers can take 3 wickets, Indian spinners had to do something yesterday. They bowled 20 overs. Again, I think that was the biggest miss of yesterday's match. रन जरूर कम बने थे, पर जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे चांसेस थे. पहले की 3 विकेट जब आ चुकी थी उसके बाद चांसेस थे. बट द इंडियन स्पिनर्स आर द वन हु लेट अस डाउन. रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव हैव टू टेक विकेट्स. बट अब तो हो गया जो होना था. That I'll still consider this Indian team as one of the best Indian teams to ever play in this World Cup, and the records says everything. Highest run scorer is Virat Kohli. Highest wicket taker is Mohammad Shami. The player with most maiden overs in the World Cup is Jasprit Bumrah. Highest batting average is Virat Kohli. Best bowling average is Mohammad Shami. So I think this is the best team, but it was a bad day, no doubt. And Indian spinners, the one who let us down. The main reason why we lost the World Cup 23 final. Please go on mute, Abhishek. Abhishek, the counter to you over here is okay. The spinners were not getting a lot of purchase out of the track, but मुझे लगा 10 ओवर तक things were okay. देखिए, पैट कमिंस ने फर्स्ट तो ही ऑप्टेड टू बोल बिकॉज उनको पता था शाम के वक्त ड्यू आएगा और उनको वो आधा एक घंटा झेलना पड़ेगा अंडर द लाइट्स जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं. और रवि शास्त्री ने वो 12वें ओवर पे शायद रवि शास्त्री एक पिच के साइडलाइंस में थे, तब उन्होंने कहा, मैदान के साइडलाइंस में थे, तब उन्होंने कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ ड्यू ऑन द ग्रास, ड्यू ऑन द फील्ड. So when you're talking about Kuldeep Yadav and the Indian spinners, Ravindra Jadeja, you have to understand that the pitch had become easier to bat on, Abhishek. You getting my point? So when you're talking, pointing fingers at the spinners, I think that's a little unfair, Abhishek. And when you're talking about Zampa तब bowling कर रहे थे जब पिच एकदम ही ड्राई था. तो Zampa was getting a lot of purchase, ball grip कर रहा था पिच में, a lot of things were happening. Right, Abhishek, that's my counter to you. And now I'll come to Kaushik over here. Kaushik, you know what I feel after hearing both of them, both are panelists? I actually beg to differ. मुझे लगता है इंडिया गेम हार गया वो 11 से लेके 50 ओवर के बीच में, जहां इंडिया ने सिर्फ 4 चौके मारे. राइट, इतना गंदा बाउंड्री रेशियो इंडिया का इससे पहले 1999 में लास्ट हुआ था. सो आई थिंक सिर्फ 4 चौके मारना
11 से लेके 50वें ओवर तक एक चौका उसमें से सिराज का है और एक चौका उसमें से शामी का है. I think that is exactly where we lost the match. Kaushik, you agree with me? Yes, no, maybe? Kaushik. Yes, see, definitely, you are on point that where India lost the match. I mean, just two boundaries from overs from the 11th over to 50th over. Just four boundaries, I guess, if I'm not wrong, from the 11th over to the 50th over. It speaks how India played defensively, and I think in the turning point of the match was the time from 9.4 overs to 10.2 overs, where India lost both Rohit Sharma and Shreyas Iyer. So I think India, the turning point of the match was that number one. Number two, you heard Pat Cummins I guess Mitchell Stark say after the first innings that the pitch was really hard to bat on. So yes, the pitch was really hard to bat on. We can see that, but yes, the boundary ratio should have been bigger, should have been a little better. I think both KL Rahul and Virat Kohli, they played ultra defensively, if I may say so. So I think they should have taken one or two risks, and obviously I agree with Tanvir sir on the way Surya Kumar Yadav played. I mean, when he came in, he had at least 7 to 8 overs in him. Uh, so I think he should have taken some sort of risks. He should have gone at least. I mean, when they're even in the last 5 overs also, if he had gone at least to against some of the bowlers, I think the score should have got a little higher, like 20 to 30 runs. But the match was between 9 to 10.2 overs. Kaushik, a very well made point where you're talking about that 1 over where things changed on its head. Also, I agree with you, Kaushik, over here, you know. And Sunny, thank you for joining us, taking your time out and, joining us on this session. कल मुझे पता है काफी काफी दिल टूटा एंड वी हैड हार्ट ब्रेक्स ऑल अराउंड. आप तो एकदम ही मायूस हो गए थे सनी. यू लेफ्ट ऑफिस जब लगभग मैच खत्म होने वाला था. झेला ही नहीं जा रहा था. इट वाज समथिंग लाइक दैट. सनी, कितना हम लोगों ने कल हार्दिक पांड्या को मिस किया. बिकॉज नाउ व्हेन आई सिट बैक एंड आई थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड यस्टरडे एंड कहां पर हम थोड़ा बहुत लैक कर रहे थे, आई फील वी वर मिसिंग हार्दिक पांड्या. दैट वाज द बिग मिसिंग लिंक यस्टरडे. सनी, डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस? सी अंकित, आप हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हो, हमने हार्दिक पांड्या को मिस करा. अगर मैच जीत जाते तो ऐसी बात आती ही नहीं. सबसे पहली वो तो ऑफ हमारी कोर्स नो बैटिंग डाउट. का कल थोड़ा सा थोड़ा सा अनलकी डिसमिसल्स हमारे साथ हुए. श्रेयस अय्यर का आपने देखा, बहुत ही अनलकी डिसमिसल. विराट कोहली बॉल को नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बॉल बैट के ऊपर आई, तो कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम हुई. अगर आप स्टार्टिंग के 10 ओवर बैटिंग या बॉलिंग के देखोगे, गेम वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया, टोटली वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया. लेकिन उसके बाद जो गेम चेंज हुआ, बाउंड्रीज नहीं आ रही, स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन. केएल राहुल खड़े रहे. कहीं ना कहीं 2019 में भी यही हुआ था कि दो बैट्समैन आगे, 3 विकेट जल्दी चले गए, उसके बाद दो बैट्समैन आगे खड़े हुए थे. तो हाँ, इंडिया की कोई, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया की इस कल के फाइनल के अंदर इंडिया की कहीं से भी कोई भी इंडिया की टीम ने गलती करी थी. टारगेट इतना कम हो गया था. टारगेट को चेज करने के लिए, अगर तुम चेज इंडिया भी कर रहा होता तो इंडिया भी इजीली उस टारगेट को चेज कर देता. इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ टोटल टोटल बनाने जा रहे हो. कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं एक चीज और बोलूंगा, जो वो पिच के अंदर हमने चेंजेस कराए, उसका कहीं ना कहीं हमें ये फल मिला. पिच अगर हमारी सपाट होती दोबारा तो सही होता. और टॉस, अगर पिच अगर चेंज नहीं कराते द्रविड़, तो यही पर तो दिस इज अ टॉस वेरी गुड बॉस नहीं पॉइंट होता, सनी टॉस हम आपने हार भी रेज. जाते. राइट, आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया है सनी यहाँ पर कि अगर पिच थोड़ा सा बाटा होता जहां पर बैट्समैन फ्री फ्लोइंग शॉट्स खेल सकते थे, आई थिंक वो इंडिया को ही फेवर करता. मुझे पता नहीं व्हाई दे ऑप्टेड फॉर अ वेरी स्लो काइंड ऑफ अ टर्नर ओवर देयर ऑन अहमदाबाद. आई थिंक वो लोग डर रहे थे मैक्सवेल इन लोगों से कि इफ मैक्सवेल गेट्स गोइंग तब क्या होगा. बट बट आई थिंक दैट बट बैकफायर्ड अंकित सनी. बट अंकित, अगेन आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी. अगर तुमने पिच अपनी स्लो बनाई है, उसके बाद तुम ड्यू फैक्टर देखोगे, तो तुम सबसे पहली चीज तुम्हें टॉस देखना पड़ेगा. टॉस ऐसा नहीं है कि टॉस यू नो रोहित शर्मा ही जीत सरप्राइजिंग के फैक्टर जाएंगे. क्या था सनी, तुम्हें पता है सरप्राइजिंग फैक्टर क्या था? आई थिंक कल कल मैच से पहले मैंने बात किया था जब इंडिया ट्रेनिंग में गया था परसों शाम को. मैंने कपिल से बात किया था एंड कपिल टोल्ड मी, अंकित भाई मैदान में कोई भी ड्यू नहीं है. 9 बजे अभी 9 बज रहा है, मैं मैदान पे हूँ, कोई भी ड्यू नहीं है.
So I felt toss will not actually hold such a big have such a big impact on the game. बट फिर कल हम लोगों ने देखा लगभग 7:30 या 8 बजे से ड्यू आ गया एंड फिर बैटिंग काफी इजी हो गया. मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, they looked in no trouble at all, and that was pretty वही heartbreaking from the bowler's point of view as well, because as वही Abhishek अंकित pointed out, spinners को कुछ भी purchase नहीं मिल रहा है, and this Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja have been running through sides. अगर अगर इंडिया ऑपोजिशन को 300 नहीं बनाने दे रहा है, a lot of credit goes to these middle overs जहां पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं. And on that note, I would like to ask Abhishek. Abhishek, you know, Travis said, right? This guy comes in. इसको पहले इंजुरी हो गया था. He comes and hurts India in the World Test Championship final. वर्ल्ड कप हो रहा है, ट्रेविस हेड का ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है. ट्रेविस हेड इज नॉट देयर, ही इज पिक्ड अप एन इंजुरी, एंड देन व्हाट डज ही डू? ही कम्स इन द फाइनल एंड प्लेस प्रोबेबली द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ. 2003 में हम लोग चोटिल हुए थे, वो स्कार था, लगा था 20 साल बाद वो स्कार हट जाएगा, लेकिन ये चोट और गहरा हो गया है. राइट अभिषेक? नो डाउट 100% अंकित, बिल्कुल. और मैं कल ये सोच रहा था कि ट्रेविस हेड डिड समथिंग जो बहुत सालों से इंडिया के लिए स्टीव स्मिथ कर रहे थे. इंडिया के खिलाफ स्टीव स्मिथ कर रहे थे, क्योंकि स्टीव स्मिथ वाज इंडियाज बिगेस्ट डेंजर. हम हमेशा स्टीव स्मिथ की तैयारी करके जाते थे, फिर वो चाहे टेस्ट मैच हो, T20 हो, ODI हो, स्टीव स्मिथ आउट नहीं होते थे हमसे. अब वो सेम ट्रेविस हेड बन चुके हैं. ट्रेविस हेड आउट नहीं होते हमसे, ये मानो या ना मानो, दिस इज अ फैक्ट. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अकेले ट्रेविस हेड ने खत्म कर दी थी, क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे. कल का मैच था, सबने कोशिश कर ली. बुमराह बीच में आ गए, शमी बीच में आ गए, सिराज आ गए, कुलदीप आ गए, जडेजा आ गए, आपके पांचों बॉलर आ गए. ट्रेविस हेड आउट नहीं हुए आपसे. ट्रेविस हेड वाज द लोन प्लेयर जो सिंगल हैंडली मैच जिता के चले गए, क्योंकि जब ट्रेविस हेड क्रीज पे आए थे, व्हेन ही वाज प्लेइंग द, बहुत डेंजर सिचुएशन थी ऑस्ट्रेलिया के लिए. वहां से एक दो विकेट जाती और ऑस्ट्रेलिया शायद कल के मैच में खत्म हो जाता. बट आपने ट्रेविस हेड की बात करी, नो डाउट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, और पूरा मैच वो खत्म करके चले गए. इनफैक्ट आप सब बात कर रहे थे, मैं कल भी ये सोच रहा था, अभी भी ये सोच रहा हूँ कि अगर अंकित, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि अगर इंडिया कल टॉस जीतता और अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा होता, वुड हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन द मैच? और क्या एक्सपेक्ट करते हो अगर पहली जो बॉलिंग है, पहली बैटिंग है, अगर ऑस्ट्रेलिया करता एंड इंडिया चेस करता, तो क्या होता मैच का? मैं यही सोच रहा था कि क्या कुछ बदल सकता था अगर इंडिया चेस करता टारगेट को. बिल्कुल बिल्कुल बदल जाता भाई, क्योंकि लास्ट में एकदम ड्यू पड़ रही थी और जो स्टार्टिंग में बॉल हरकत कर रही थी वो हमारे बॉलर्स को भी करती. और ट्रेविस हेड की अंकित अभी बात कर रहा है, ट्रेविस हेड पे कहीं ना कहीं हमारे सिराज बहुत भारी रहे सनी हैं, और कल सनी सिराज सनी की सनी सनी ऑन द हाइंडसाइट हम कुछ भी कह सकते हैं. देखो, हमें पता था डेविड वार्नर ट्रेविस हेड ओपन कर रहा है, हमें पता था मोहम्मद शमी इज गुड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, और हमने क्लियरली देखा रोहित शर्मा गिव द सेकंड ओवर टू मोहम्मद शमी, विच इज अ शामी. वेरी गुड कॉल. ये बहुत ही एग्जैक्टली टैक्टिकल मूव था जो काम भी किया. वर्क फॉर बट अस. यू नो, एग्जैक्टली राइट, सो वही ऑन द हाइंडसाइट अब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम हार चुके हैं. वी हैव लॉस्ट अनदर वर्ल्ड कप फाइनल एंड आईसीसी फाइनल. तो अब क्या होता है, 2013 के बाद अब एक भी आईसीसी ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में नहीं है. लगता है कोई चॉपिंग एंड चेंजिंग होने वाला है आफ्टर दिस. कौशिक, जैसे पाकिस्तान में काफी लोगों के ऊपर एक्स आया है, आपको लगता है इधर पर भी कुछ होने वाला है? बिकॉज राहुल द्रविड्स टेन्योर एंड्स. Yes, see, Rahul Dravid's tenure ends. That is one of true fact. And he yesterday he was asked about this question that whether he will be continuing as Indian head coach. And Rahul Dravid said, I haven't decided anything as of yet because my entire focus was on the World Cup. So see, पाकिस्तान में जो चेंजेस हुआ है वो होने वाला था because we all know what I mean. Pakistan are very unpredictable. बट और उन लोगों का कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होता नहीं है, कहीं से भी किसी को पकड़ के लेके आके बैठा देता है. So, but that is not the case with India, and I don't think there will be any changes in this Indian team in terms of leadership, in terms of support staff and all. Yes, one change there might be a change in the head coach's position if Rahul Dravid opts to not renew his contract. But other than that, I don't see any change in this team because they have made this team for the last 2 years, and सामने next year T20 World Cup है, and then the next year Champions Trophy है.
and I think both Virat Kohli and Rohit Sharma will be playing the Champions Trophy in Pakistan. So I don't see any changes. Yes, we have lost this World Cup. We our trophy drought continues, but we still have two more trophies to play for. जो जहाँ जैसे जिससे हम लोग ये आईसीसी ट्रॉफी डॉट मिटा सकते हैं. And I think this World Cup, this ODI World Cup, this is done and dusted now. This is past. Today is a new morning, and I think all the Indian players will be feeling the same. Yes, there will be disappointment for not for coming so close and not winning the World Cup, not lifting the World Cup. But players' life है, sportsman's life है. So as Rohit Sharma said yesterday that we have to move forward and all. So I think there will be not much any changes. अगर कुछ changes होता है, so that will be for the head coach's position. अब देखना पड़ेगा राहुल द्रविड़ रहता है कि नहीं रहता है. नहीं भी रहता है, then we have a VVS Lakshman waiting in the wings. So सनी सनी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखो अब जो भी हुआ हो गया है, राइट. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट आपको क्या लगा कल इंडिया थोड़ा सा लैकलस्टर थे, मतलब वो जो हंगर होता है वो हंगर मिसिंग था, बिकॉज कहीं जाके मुझे लगा एंड ऑस्ट्रेलिया टोटली ऑपोजिट था. ऑस्ट्रेलिया जैसा खेल रहा था जैसे एक फाइनल में खेला जा सकता है फ्रॉम अ चैंपियन साइड, राइट. सो आई फेल आपको ये भी देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से फील्डिंग कर रहा था. दे वर सेविंग दोस बाउंड्रीज, एंड जब तुम बाउंड्री सेव करते हो ना, दैट बिल्ड्स प्रेशर ऑन द बैट्समैन ये सोच रहा है यार बाउंड्री नहीं आ रहा है, अब कहाँ से बाउंड्री निकालो. तो कहीं जाके क्या आपको लगता है इंडिया थोड़ा हल्के में ले लिया था कल ऑस्ट्रेलिया को? कहीं ना कहीं मुझे तो लगा हाँ कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो प्लेड अ पार्ट. सनी, अंकित आपको कहाँ पे लगा ऐसा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हल्के में ले लिया था? you know, with the kind of shots that we were playing, the shots that got our players out, I felt at some point of time they were just giving away with their wickets. Yes, I'll come to you Kaushik, but let Sunny answer. Sunny, तो अंकित सबसे पहले रोहित शर्मा जैसा स्टार्ट दे रहे थे उन्होंने वैसा ही स्टार्ट दिया, बिल्कुल जो प्लान था उस हिसाब से चले. शुभमन गिल का हमारा जल्दी विकेट आ गया. विराट कोहली 55-60 के बाद अनलकी डिसमिसल, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ. श्रेयस अय्यर जैसा खेल रहे हैं एक मैच में, अब इस मैच में एक मैच में कोई प्लेयर नहीं चलता तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसकी अप्रोच गलत थी या कुछ भी था. इट वाज एज एंड ही गॉट आउट. श्रेयस अय्यर के बाद केएल राहुल हमें इतने रन हमेशा बना बना के दे रहे थे. केएल राहुल ने भी अच्छी पारी खेली कल. I think फिर केएल अगर आप राहुल का जो डिसमिसल था वो शायद बेस्ट बॉल था पूरा मैच का, which got वही केएल राहुल वही out. तो अंकित यहाँ पे मैं शायद बैट्समैन के अप्रोच को गलत नहीं बोलूंगा. फिर मैं बॉलिंग पे आता हूँ. बॉलिंग के अंदर हम बात करेंगे. पहला ओवर ठीक है, पहले ओवर के अंदर एक कैच ड्रॉप हुई. उसके बाद सिराज ओवर कर नहीं वो शामी कैच ओवर ड्रॉप करने नहीं के था लिए. सनी, दैट वाज 50-50. दैट हाँ वो कैचेस तुम भी क्रिकेट नहीं, खेलते हो, विराट तुम्हें भी अगर पता अगर है अगर विराट क्या कोहली एग्जैक्टली खड़े हुआ हुए था. हैं, द काइंड ऑफ फिटनेस विराट नहीं कोहली लेके काइंड ऑफ आते हैं फिटनेस फील्ड के इज ऊपर. डिफरेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कोहली इज अ ह्यूमन. वो बॉल कोहली से ठीक है बहुत ज्यादा आगे था. ठीक है, चलो वो भी कैच नहीं थी, चलो वो एक अप्रोच खत्म हो गई. दूसरे ओवर में हमने देखा शामी ने इजीली एक विकेट निकाल दिया. फिर दूसरा विकेट हुआ. 3 विकेट हमारे पास 10 ओवर में थे. 10 ओवर के बाद जो पार्टनरशिप थी, दूसरी जो टीम खेलने के लिए आई है वो भी तो बैटिंग करने के लिए आई है. उनके पास उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला. उन्होंने ऐसा कोई लेजी शॉट नहीं खेला. उनके साथ इतना कोई लक भी उनका काफी ज्यादा साथ दे रहा था. फिर डीयू आ गए. आप बोल रहे हो डीयू अब तक पूरे पूरे एक हफ्ते से डीयू नहीं थे अहमदाबाद में. कल के मैच में अचानक से डीयू आ जाती है. तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया की अप्रोच कहीं से भी अंकित गलत थी. और इससे अच्छी टीम शायद टीम इंडिया कभी इससे अच्छी बन के टीम इंडिया गई नहीं है. दिस इज लाइक आरसीबी, सबसे अच्छी टीम है Hey, लेकिन हार के please, आ गई please, है. please. सनी प्लीज डोंट कंपेयर द इंडियन टीम विद आरसीबी. मुझे पता नहीं तुम घुमा फिरा के सब कुछ विराट कोहली के इर्द गिर्द कैसे ला सकते हो. यू आर अ जीनियस सनी. Abhishek has a point. I know Kaushik's hand also went up. I'll come to you, Kaushik. Kaushik, I think I'll allow Kaushik to go first and then you, Abhishek. Kaushik. See, I don't think there was any problem with India's approach yesterday. Yes, toss played a part, the due factor played a part. Important thing I think that made the difference was India didn't have a plan B. Rohit Sharma didn't have a plan B. I mean, after the Indian bowlers were getting hit and all everything, a captain should have a plan B. And also I think India took too much pressure on themselves, because if you see after Mohammad Shami got that wicket of David Warner in the second over, he went for
for runs. I mean, the pressure was clearly visible on Mohammad Shami. He was bowling a lot of extras. He was bowling white balls. He was pitching short pitch balls, which the Australians were hitting very easily. So I think India panicked very much. And also, if you see KL Rahul's performance behind the wickets in the whole tournament, he has been brilliant behind the wickets. But if you see yesterday, he was fumbling, he was missing the line, and his keeping was also not up to the mark. So I think two things. India didn't have a plan B, number one, and number two, the Indian players took too much pressure on them. And it was clearly visible on Rohit Sharma's face when India came out to bowl. I mean, it was not a usual Rohit Sharma face that we used to see in the whole tournament. So I think it was too much pressure on the Indian team, on the Indian players individually, and that somewhere let the Indian team down, that somewhere let themselves down. And so I think there was no problem with the approach, but yes, the nerves played a big part in India's loss. Abhishek. नो डाउट मैन, मैं को बस सनी के पॉइंट पे कुछ कहना है था, बस अब जो हो गया, बट आरसीबी ने आदत कर दी है, इट्स नॉट इतना टफ नहीं है बिकॉज ऑफ द आरसीबी टू डाइजेस्ट दिस थिंग, बिकॉज बीइंग अ फैन ऑफ आरसीबी आपको आदत हो चुकी है इन चीजों की। वो पता होता है कि अब इससे इन चीजों से कैसे डील करना है। बहुत ज्यादा टफ है जरूर, पर इतना भी नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहले हो चुका है, ये अब आदत पड़ चुकी है, तो कुछ कह अंकित, नहीं एक चीज सकते। और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। पैट कमिंस, वो WTC जीते, एशेज रिटेन करे, ODI वर्ल्ड कप जीते, T20I वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे लग रहा है वो भी पैट कमिंस छोड़ेंगे तो नहीं है। और इतने अंडररेटेड ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, आपने देखा, कोई ओवर रेटेड नहीं है पैट कमिंस। सिर्फ अब दो तक सब मैचेस कुछ में वो जीतते कैप्टनसी हुए आ रहे करी हैं। थी। देखो, इधर हमारा ट्रॉफी लग खराब हो गया। So yes, all in all, it was heartbreak, as we all, the entire country was heartbroken yesterday after the loss. Some of my colleagues, it was actually hard for them to digest the loss. They left for home even before the match got over. On that note, but still, I have to point this out. This is a very special Indian team, guys, and throughout the World Cup, they have given us a lot of happiness over this 1.5 months or so. Thank you to the Indian team and the entire coaching staff and the management. Thank you BCCI for all the good things that you've done over the 1.5 months. And I think the process started 2 years back when they started, targeting the World Cup because they wanted to win it. All the preparation was around the World Cup, and we were asking questions like, why the heck are they experimenting so much and all of that. Now we know why they were doing it, but the final hurdle is still not breached. Hopefully, we'll breach it in the T20 World Cup that takes place in 6 months' time from now. Thank you so much for joining me on this session on Off the Pitch with Ankit on India.com. Thank you so much, guys. Stay stuck to this place for all the latest across sports. Thank you so much.